हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 पेडोलॉजी ऑफ इंग्लिश का करिकुलम टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि करिकुलम मतलब हम जो चीज़ें पढ़ाते हैं वो चीज़ें करते हैं। टेक्स्ट बुक जो हमारी जो हम पढ़ाते हैं उसका उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और जो मटेरियल मटेरियल डेवलपमेंट है, मतलब जैसे कि जो हम उन्हें टीचिंग लर्निंग मटेरियल देते हैं तो उससे क्या उन पे असर पड़ता है, या वो किस चीज़ से इससे उनको देखते हैं और कैसे उनकी डेवलपमेंट पे ये हेल्प करता है। So the question is, what is TLM and state the need for different in learning? तो जो TLM है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हमें जो जैसे कि हमारे मैप्स हो गए, मॉडल हो गए, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो गया, या हम फाइल्स बनाने के लिए देते हैं, तो वो सब किस में आ गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड में आ गया, कि इससे बच्चों को एक्स्ट्रा चीज़ मिले। जैसे कि आप बोल दो कि इंडिया है, यहाँ से इसका डायमीटर है, लॉन्गिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, लेकिन अगर आप उसे एक वर्चुअल मैप पे ना दिखाओ या फिर 3D में पिक्चर्स में दिखाओ तो उसको समझ नहीं आएगा, वो इमेजिन नहीं कर पाएगा। या फिर आप ब्लैक बोर्ड पे ही मत बनाओ, ठीक है, तो उससे स्ट्रक्चर, उसका एरिया, लॉन्गिट्यूड, लैंगिट्यूड, टिल्टेड, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी जब तक आप उसे मैप पे नहीं दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड होता है, और इसमें सब हेल्प करते हैं किसी भी स्टूडेंट को समझने के लिए। स्टेट द नीड फॉर डिफरेंट इन लर्निंग्स। Okay, when you are explaining a concept for geography, describing an event for history, teaching how to recite a poem, or solving a mathematical problem in the classes, you can make your presentation more interesting and more meaningful for the learners by using some object or materials to aid your verbal descriptions. Using a large variety of materials in classroom is found to enhance better understanding of concept and for making learning more interesting. The Chinese says a picture tells 1,000 words and has relevance in this context. Mm, Earlier materials were sparsely used, mostly by the teacher as aid to teach in the class, but today, with the rapid change in the emphasis for teaching to learning in a learning center approach, the learners need more and more materials of various types of enhance his or her capacity to learn in groups or individual. Therefore, learning materials can no longer be used restrictively as teaching aids. They should rather be used by the student for learning and by the teacher for aiding teachers. Hence, appropriate such as materials is called as teaching learning material. सो जैसे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हमें बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। सिर्फ हम सिंपल ब्लैक बोर्ड से चीज़ नहीं होती है, हमें अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड, जैसे कि ग्लोबल मैप, या फिर मैप्स हो गए, या फिर प्रोजेक्ट हो गए, या फिर 3D एनिमेशन हो गए, प्रोजेक्टर से वो सारी चीज़ों को शो करके फिर उन सबको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो चिल्ड्रन है उसको सब कुछ समझ आए, और जो कि लर्नर लर्नर को है हमेशा सेंटर में रखना है। लर्नर सेंटर अप्रोच को हमें अडॉप्ट करना है। Teaching learning material is and its anacromy TLM is now universally in use. अब ये हर एक दुनिया में यूज होता है, हर एक वर्ल्ड और हर एक कंट्री में। It is essential to have a better understanding of a nature and type of these materials viewed from the perspective of all effective management of teaching learning in classrooms, so that they are used efficiently for facilitating learning. But when is the but what is the need for TLMS in the teaching in the TLMC is the teaching learning particularly for the learners. But what is the need for teaching learning materials in the teaching learning particular for the learning at the elementary stage of schooling? Elementary stage हमें ही क्यों provide कर देना चाहिए? Both from the psychological and educational point of view, the concrete material are essential for the
facilitating learning for several reasons, some of which are as follows. So कुछ कुछ हम reasons देखेंगे अब अपने. So first, learning of new concept become easier if the learner is presented with the familiar material related to the concept. अब जैसे कि एक बच्चा उसे आज तक कभी नहीं देखा कि इंडिया कैसा होता है, क्या होता है, करता है, वो पढ़ने जा रहा है इंडिया के बारे में, ठीक है, लेकिन आपने उसे मैप दिखा दिया, आपने उसे ग्लोब पे दिखा दिया, आपने उसे 3D इमेज दिखा दी, तो वो कैसा बचेगा, इसकी शेप कैसी है, कितनी लंबाई है, आपने एरिया बता दिया, विड्थ बता दी, ठीक है, स्टेट्स बता दिए. क्या है, वो जब पढ़ेगा आगे जाके या फिर अपने बुक्स में पढ़ेगा तो उस चीज़ को काफ़ी रिलेट कर पाएगा. बोलोगे इंडिया तो उसके दिमाग में उससे इंडिया का मैप बनेगा, एक पर्टिकुलर मैप बन के उसके दिमाग के अंदर आएगा कि हाँ इंडिया ऐसा दिखता है. सपोज आपने उसे मैप ही नहीं दिखाया था कभी और आप इंडिया इंडिया बोल रहे हो तो वो कभी अपने दिमाग में सोच ही नहीं पाएगा कि इंडिया होता मतलब इंडिया का शेप कैसा है, दिखता कैसा है, ठीक है. सेंसेस आर द गेटवे ऑफ द लर्निंग. जो हमारे सेंस होते हैं, हम हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों का सेंसेस से सिखाओ. जितने ज़्यादा सेंस होंगे, जैसे कि अगर हम टीवी या फिर बोलते हैं टेलीविजन से हम सिखाते हैं तो उसमें क्या है, ईयर्स भी जा रहे हैं, हमारा आइज़ भी देख रही है, तो दो सेंसेस का यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं माउथ का भी हो रहा है, क्योंकि बोलेंगे भी हम सीखेंगे भी उससे. जो जैसे बच्चों को क्या वो सिखाते हैं, पोएम गाने के लिए बोलते हैं या फिर पोएम सिखाने के लिए बोलते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ क्या है, जो सेंसेस से जल्दी सीखते हैं, जो सेंसेस से अच्छे से सीख पाए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं. जितना ज़्यादा सेंस होगा उतनी जल्दी सीख पाएगा जो बच्चा है, ठीक है. सेंसेस आर द गेटवे ऑफ लर्निंग. Perceptions both sorry become clearly with things are sensed in different ways, such as by seeing, touching, taste, and smelling, using the sense organs. Material of a different color, size, texture, order, and taste sharp perceptions, and thus make learning easier, especially at earlier age. Children like to play with variety of materials, and these easily get and engage in manipulating with materials. When an appropriate task is given with sufficient and appropriate material, the children get naturally attached to the material and like to use the material for the completion of the task. A task without any material seems quite boring and burdensome for the children. This feeling for the beginners makes the completions of the task very difficult. Usually, small children are attached to objects of a different colors and size, and how their curiosity in manipulating these in various ways, which these materials relating to the described objects of learning can play a vital and positive role in breaking the monotony of the teacher-centered classroom. जैसे teacher-centered ये रखना है, हमें child-centered classroom रखना है. जब हम teacher learning मटेरियल का यूज़ करेंगे तो child अपने आप center में आ जाएगा. Which is the most cases I'm facing rote learning. जो rote learning है, जैसे रट्टा मारने को उसको हम बिल्कुल नकारते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. The very presence of material before the child moves there spontaneously to play and manipulate with these materials, thus making them active learners. These materials help the children to participate in the learning actively in a lively manner, minimizing their passive learning. जैसे कि पता क्या है उसे मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन हम ऐसे ऐसे चीज़ें लाएंगे तो फिर वो चीज़ें लाएंगे तो बच्चे जाएगा अपना खुद ही उसमें पढ़ाई में उसका मन लगेगा. Teaching learning materials are needed for effectively self-learning. With the use of the appropriate material, one can learn at her and her own convenience with total control over the her and place of learning. In case of multi-grade and multi-level situation, TLMs provide vital help to the teacher for effective management of their classes. By using TLMs, the attitude of a teacher becomes very friendly while explaining model display exhibits of making the children to overall place. A friendly atmosphere is built with the greatly help in proper learning. So जैसे कि अगर हम इधर भी टीचर लर्निंग मटेरियल है तो बच्चा क्या होगा एक्सप्लेन करे, जो टीचर होगी वो बच्चों को क्या करेगी एक्सप्लेन करेगी, तो जिसकी वजह से जो रूडीनेस है, जैसे बच्चे जो डरते हैं टीचर से वो कम होगा और टीचर क्या होंगे और ज़्यादा फ्रेंडली होंगे बच्चों के साथ. अभी के लिए इतना ही, थैंक यू.